Everyone, a very good evening to all. Hi everyone, good evening. Just wait for 1 to 3 minutes more, right? Some students were also joining. Then we're going to start the class. Okay, so let's start with the class, everyone. So this is a problem solving class, है ना? So इससे पहले वाली classes में we already covered the entire chapter in detail way. So in today class we are going to see some important previous year question from this chapter. ठीक है? तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर से, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। डन एवरीवन। चलो, so the first question is the electronic configuration of copper plus 2 is 3D9, whereas that of copper in plus 1 oxidation state is 3D10. Now which of the following is correct? तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना कॉपर इन प्लस 2, वो 3D9 होता है, ठीक है, और प्लस 1 में 3D10 होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द फर्स्ट इज कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल। पहला क्या बोला है? कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल। दूसरा बोला है कॉपर टू इज लेस स्टेबल। ओके। तीसरा, कॉपर प्लस वन एंड कॉपर प्लस टू आर इक्वली स्टेबल। एंड द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर वन एंड कॉपर टू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट, कि कौन सा कॉपर सॉल्ट है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो कौन सी बातें बेटा आपको यहाँ पे सही लग रही है, बताओ। बी। ओके। बी। ओके। देखो बेटा, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हेयर इज दैट इज, आप सभी लोग थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। जो कॉपर प्लस टू होता है ना,
because in copper plus 2 we have 3d9 electron. So this 3d9 electron is much more stable. सिर्फ यही नहीं देखते कि D10 है, फुल्ली फिल्ड है तो स्टेबल है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट? और भी फैक्टर्स होते हैं. यू आर कंसिडरिंग ओनली D0, D5, D10 वाला फैक्टर, कि इन कॉपर प्लस वन दे हैविंग 3d10 फुल्ली फिल्ड, so they are more stable. This is not true always. For example, in case of copper plus 2 is more stable due to this more hydration enthalpy. And कॉपर प्लस टू ऑल्सो शो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन. ठीक है, क्या शो करता है? डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में. तो ऑलवेज रिमेंबर, कॉपर प्लस टू जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा. वाई? ड्यू टू ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एनर्जी, एंड उसके साथ ही साथ इस पे प्लस टू का चार्ज भी है. दे शो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन एज वेल. तो ये हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है. गॉट इट? चलो. So beta, correct option is A. That is copper plus 2 is more stable. Everyone got it? Or need explanation? Then I'll explain you. जल्दी बताओ. Again, repeat. देख, explain ना. Okay. देखो. So copper plus 2 is generally, always remember, copper plus 2 generally more stable than copper plus 1. And if this is in aqueous solution, basically this has happened. Why? Because due to the phenomenon hydration energy. So while removing two electron from copper plus 2, let us assume if we have a plus 2 electrons, right? So plus 2 का charge कब आया होगा copper पे? When they lose 2 electron. Plus 1 पे आया when they lose 1 electron. So basically, when removing 2 electrons from copper plus 2 require a more energy than removing one electron to form copper plus. So the higher the hydration enthalpy of copper plus 2 compensate for this extra energy input and making Cu2 plus is more stable in the solution. तो Cu plus 2 जो होता है वो ज्यादा stable होता है. So just remember कि due to small size and due to the more hydration enthalpy in water aqueous solution, copper plus 2 is more stable. ठीक है? So ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है. Now, tell me, iron 3 catalyzes the reaction between iodide and persulfate ion, in which Fe plus 3 oxidize the iodide ion, Fe plus 3 oxidize the persulfate ion, Fe plus 2 reduce the iodide ion, या Fe2 plus reduces the persulfate ion. So कौन सा यहाँ पे सही है? हम्म. Iron 3 plus catalyzes the reaction between iodide and persulfate ion, in which Fe3 plus oxidize the iodide ion. C. Okay. दूसरा Fe plus 3 oxidize the persulfite ion, Fe plus 2 reduce the iodide ion, and next we have Fe plus 2 reduce the persulfite ion. ठीक है? So Fe3 कैटलिस्ट की तरह काम करता है आयोडाइन एंड परसल्फेट आयंस के बीच. तो यही बताना है कि ये क्या करेगा क्या नहीं. बताओ भाई. हम्म. तो तुम सबको पता है ना ये वाला रिएक्शन जो हम लोग करते थे. दैट इज वी हैव एन Fe plus 2, एंड व्हेन वी ट्रीट दिस विद, किसके साथ ट्रीट कर रहे हो? तो अगर आप इसको ट्रीट कर दो आयोडाइड आयंस को तो आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा. हम्म. यानी अगर आयोडाइड आयन है, I2 नेगेटिव है, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? Fe+3, एंड इट कन्वर्ट दिस इनटू, जैसे मान लो यहाँ पे आयोडाइड नेगेटिव आयन था, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ. ध्यान से देखो बेटा क्या है. सो वी ऑल नो दैट Fe in
+3 oxidation state, and they oxidize iodide, that is 2I negative into 2Fe+2 एंड I2, यानी आयोडीन और इसमें कन्वर्ट कर देते हैं. यानी whenever we treat this Fe3 with I2, they convert this into 2Fe2 एंड I2. तो I2 को ऑक्सीडाइज कर दिया. सेकंड बोला है कि Fe+3 ऑक्सीडाइज द पर सल्फेट आयन. तो ये गड़बड़ है ना. कैसे गड़बड़ है देखो. बिकॉज वी हैव 2Fe+2. Now, when we treat this 2Fe+2 with H2O8 twice negative, ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है. 2Fe+3 + 2SO4 ट्वाइस नेगेटिव. हमें पता था पर सल्फाइड आयन में कन्वर्ट होता है. तो ये वाला स्टेटमेंट जो है कि Fe+3 ऑक्सीडाइज द पर सल्फाइड आयन, ये गलत है. Fe+2 सल्फाइड को Fe+3 में करता है. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई. नाउ व्हाट अबाउट सी. Fe+2 कह रहा है कि वो रिड्यूस कर देता है. ठीक है. सो याद रखो. तो बी वाला तो गलत है कि Fe+2 ऑक्सीडाइज द परसल्फेट आयन. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज Fe+3 डज नॉट ऑक्सीडाइज परसल्फेट आयन. नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन सी. तो Fe+2 reduce the iodide ion. This statement is also incorrect because Fe+2 does not reduce iodide ion. वो तो ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. सी और बी. और डी वाला बिल्कुल सही है कि Fe+2 रिड्यूसेस द पर सल्फेट आयन. तो पर सल्फेट आयन को सल्फेट आयन में रिड्यूस कर देता है. ठीक है. सो ये हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है. यानी सबने सही बोला था. ऑप्शन ए एंड डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. गुड गुड एवरीवन. लेट्स सी द नेक्स्ट. Arrange the following element in the increasing order of number of unpaired electron. So you need to calculate the unpaired electron and then you need to arrange. तो फटाफट कलेक्ट कैलकुलेट करो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी में. तानुष ऑप्शन ए. नो बेटा, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. दोबारा कैलकुलेट करो. रेणुका बी. वेरी गुड बेटा. बी इज द करेक्ट वन. गुड.
Done? Everyone, देखो, I'll explain you. If we talk about scandium, is scandium having 3d1, 4 is 2. If we talk about chromium, exceptional case था 3d5. How to remember the atomic number? So, beta, it's a very simple to understand, right? Its series start from scandium having atomic number 21. So science teacher very cruel, मांगे fair, copy, nickel, copper, zinc. So start from 21 till 30. So you can easily remember. There is no difficult to remember the name. It's a very simple. क्रोमियम 1 2 3 4 पे आना था तो क्रोमियम एंड कॉपर वी हैव एक्सेप्शन केस सो 3d4 ना होके 3d5 एंड 4s1 हो गया देन वी हैव अ वेनेडियम दैट इज सेकेंड नंबर एलिमेंट है ना साइंस टीचर वेरी 3d3 सो दैट इज 3d3 4s2 अगेन वी हैव अ टाइटेनियम that is 3d2, 4s2, and manganese. So manganese having 3d5, 4s2. So the maximum number of unpaired electron are present in chromium. देखो 5d में और एक s में. So maximum is 6 unpaired electron. So chromium B का सबसे ज्यादा होना था. So only we have a one option in which B is more. That is option number B. ठीक है बाकी में E, A और D दे रखा है. This is not the correct one. So the correct is option number B. Next. The number of elements from the following that do not belong to the lengthenoid. कौन सा lengthenoid में belong नहीं कर रहा है बताओ तो जरा सोच के. Which of the following element does not belong to the lengthenoid? The number of elements from the following that do not belong to lengthenoid. Yes. क्या बोल रहे हो आंसर बोलो एवरीवन. यस एवरीवन फटाफट आंसर बताओ क्या होना चाहिए. One element does not belong to the lengthenoid. Very good beta. Right. Good. Correct. And which कौन सा element है वो.
CM. B. Okay, Cm. Right. Very good, beta. So Cm does not belong to the lanthanoid, it belongs to the actinoid. So option B is correct. Next, the number of ions from the following that have the ability to liberate hydrogen from dilute acid. We have a titanium 2 plus, chromium 2 plus, vanadium 2 plus. So you have to identify कि out of the following these three, the number of ions from the following that have the ability to liberate hydrogen from dilute acid. Hmm? Yes. How many? Question asking the number of ions from the following that have the ability to liberate hydrogen from from dilute acid. संजना बोल रही है बी. ओके, दैट इज टू. 2, Which sir. two, B. बेटा? Which two? Beta, if you observe very carefully now, so how will you identify कि which one will C. liberate 2 plus. hydrogen or not? So we know one thing, that is electrochemical series, right? CM 2 So we know plus. now that is hydrogen having the standard electrode potential value 0.0 volt. So anything above this, like for example, if we have a zinc, we have a iron, we have a chromium, we have a vanadium. So these all lie above. चाहे वो Ti+2 हो, चाहे वो chromium+2 हो, or we say C. vanadium+2 हो. So they all lie above the hydrogen in the reactivity series. So we can say that 3 is the correct one, right? Got it, everyone? They having more negative value. Hmm? चल. The metal that show highest and maximum number of oxidation state. ऐसा मेटल का नाम बताओ जो हाईएस्ट शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट और भी से मैक्सिमम. Mn. Mn you are saying manganese. Yes, sir. How much? +7. Good, very good. So manganese will show +7 oxidation state. The element will show only one oxidation state जो सिर्फ एक करता है. Tell me which element show only one oxidation state? Nickel? No, beta. Nickel will show +2 +3 as well. Titanium? No.
स्कैंडियम, गुड। सो स्कैंडियम इज द करेक्ट वन बेटा। हमने डिस्कस भी किया था ना, स्कैंडियम जो होता है वो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +3। ओके, सो स्कैंडियम विल शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टू बिकम 3d0। So scandium is the correct one. Now tell me, this is assertion reason type question. Everyone try to read first. पहले एक बार पढ़ो ध्यान से एंड फिर बताओ। Yes, everyone. C. Okay. Both A and R true, but R is not the correct explanation of it. Okay. What is state? In aqueous solution, Cr+2 is reducing while Mn+3 is an oxidizing in nature. सही बात है। Cr+2 is reducing मतलब what? Cr+2 having 3d 4 electronic configuration. So they are having the strong tendency to become ऑक्सीडेशन हो जाए इसका, और Cr+3 में चला जाए, बिकॉज +3 में 3d3 हो जाएगा विच इज मोर स्टेबल। तो ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग, तो सही बात है। एज कंपेयर टू Mn+3, Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग। सो Mn+3 से चाहता है मैं +2 में चला जाऊं। वाई? बिकॉज +3 में 3d4, यहाँ 3d5 होगा विच इज मच मोर स्टेबल, है ना। सो ये इसका रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग, पहला तो सही है। रीजन बोला है extra stability to fill the electronic configuration you observe then will completely fill. So बेटे तो दोनों सही बात बोल रहा है, both are correct, they are the correct explanation, because the extra stability जो होता है हाफ फील्ड का, वो ऑब्जर्व होता है इन कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है और वो भी। ठीक है, नेक्स्ट। एक्सप्लेन। बेटा देखो, एज वी नो, देख ध्यान से ऑब्जर्व करो रीजन। देखो, बोल रहा है कि हाफ फिल्ड, फॉर एग्जांपल क्रोमियम इन +2 दे शो 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट एज कंपेयर टू 3d4, 3d3 is more stable. Similarly, Mn in +3 they show 3d4, but they become 3d5. So we already studied na d0, d5, d10 and d3 in case of chromium. They are much more stable. Why? Due to half filled electronic configuration. So half filled electronic configuration होने के चलते ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है समझ। तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है। गॉट इट? चलो, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ बेटा जल्दी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या सही लग रहा है आप लोगों को, बताओ।
Done. Which one, beta? A and C. Okay. So A and C are the correct one. That is Mn2O7 जो होता है ना, वो ऑयल होता है एट रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, so they are oil at room temperature. And V2O4 react with acid to give not VO2. Instead of they are giving VO4 solution. CRO is basic, हम सबको पता है, पहले ही बताया था. Lesser the oxidation state, more in basic character. So जब oxidation state कम होता है तो basic, oxidation state ज्यादा होता है तो acidic, और बाकी neutral होता है. V2O5 does not react with acid. V2O5 तो एम्फोटेरिक होता है, तो रिएक्ट करता है एसिड और बेस दोनों के साथ. तो ये गलत बोल रहा है, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी. डन. better for हम्म. ओके. टेल मी. द ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 and पर्पल कलर ऑफ KBNO4 इज ड्यू टू. किसके चलते होता है ये? B, sir. चार्ज ट्रांसफर. वेरी गुड. So it is due to charge transfer method. Done. So this is all about. Beta, everyone get the notes of D block element? Everyone? No, sir. No? Yes, sir. Okay. So, no, yeah. So I'm sharing the notes. No, don't worry. And one important message for all of you, that is from tomorrow, there is a summer vacation. So no classes from tomorrow. So we'll update 1 week before when we are going to start the next class. Okay. So from tomorrow, there is no classes. So try to cover these three chapters in a very detailed way. Try to solve numericals, try to solve questions. And I already shared the PPT with all of you. दोनों का पीपीटी मैंने शेयर किया. वैसे तो मैंने डी ब्लॉक भी ऑलरेडी सेंड इट टू यू. बेटा, it will be informed, right? Don't worry. It will be informed to your school or any medium. So you will be informed. Don't worry. Right. So I'm sharing the link with all of you. Just give me a second.